तो यस, कल हमने डिस्कस किया कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट के साथ साथ हमने दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, करेक्ट। तो दो क्वेश्चंस ही सॉल्व किए, वो जस्ट बिगनर क्वेश्चंस थे। आज हम लोग थोड़े इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चालू करेंगे जिसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हो। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पहले हम लोग शुरू करेंगे कैसे, रिविजन से। तो हम लोग पहले फर्स्ट थिंग विल रिवाइज जो भी हमने येस्टरडेज क्लास में जो भी पढ़ा है, विल रिवाइज दैट एंड देन फिर आज का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ था। अगेन कल हमने एक मेमोरी टेक्निक याद की थी विच इज़ D3, ठीक है। D3 मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, फैक्ट्री WIP एडमिन। फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, WIP मतलब WIP का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स, एंड एडमिन ओवरहेड्स मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एंड उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद FGSD। तो D3 डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, फैक्ट्री, WIP एंड एडमिन। उसके बाद हम लोग क्या किए, फिक्स्ड FG एंड SD। FGSD मतलब फिक्स गुड्स का एडजस्टमेंट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एडजस्टमेंट। तो इसमें साथ में अगर हम लोग देखें तो हमको अगर D3 है विच इज डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे PC मतलब प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर फैक्ट्री का अगर हम लोग एडजस्टमेंट करें, फैक्ट्री एंड WIP का एडजस्टमेंट करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अगर सिर्फ फैक्ट्री ओवर्स का करें तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा, और WIP का करें तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड एडमिन का एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर नीचे उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करने के बाद हमको क्या आ जाएगा, COGS, ठीक है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज कर लिया, करेक्ट। तो ये हमारी मेमोरी टेक्निक, अगर हम लोग इस पे ग्रिप बना ले तो इससे आपका सारा कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अगेन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि हमको दे देता है क्या, प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद हमने क्या याद किया था, उसके बाद हमने फैक्ट्री, WIP और एडमिन। तो फैक्ट्री इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर WIP का एडजस्टमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड देन हमारा एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये हमको याद रखना है, मैंने पढ़ा था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिस्टेक्स होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल एडमिन ओवरहेड्स, ये दोनों का बाइफर्केशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमने FG एंड SG देखा। FG मतलब फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा SG, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, SD, ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल सेल्स, एंड यहाँ पे हमारा हो जाता है कॉस्ट शीट कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट शीट मेमोराइज कर लिया, एंड हमने क्या किया, ये मेमोरी टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड कल जो सॉल्व कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, कल सोल्यूशन में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो एक चीज़ हम लोग क्वेश्चंस में मार्क कर रहे थे। क्या हम लोग मार्क कर रहे थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 में क्या है, फर्स्ट है इसकी, जहाँ पे भी हम लोग को मटेरियल का क्वेश्चन दिख, मटेरियल का पॉइंट दिख रहा था, हम उसको क्या मार्क कर रहे थे, 1। जहाँ पे भी हमको डायरेक्ट लेबर का पॉइंट दिख रहा था, वहाँ पे हम क्या मार्क कर रहे थे, 2। जहाँ पे भी हमको डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट मिल रहा था, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस में मार्क कर रहे हैं। तो सो दैट क्या होगा, जब आप स्टार्ट करोगे सोल्यूशनिंग करना, तो आपको पता होगा कि वन, अब जैसे 1 डायरेक्ट मटेरियल से आपको शुरू करना पड़ेगा, आप सारे 1 के पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड आप इजीली एडजस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है। सेम होता है बाकी 2 3 के लिए। 4 वॉज क्या, 3 वॉज डायरेक्ट एक्सपेंस, 4 वॉज WIP एंड 4 वॉज फैक्ट्री ओवरहेड्स, एंड 5th वॉज WIP। ये 5 पॉइंट अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते वक्त मार्क कर लिए तो हमारा आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉर्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज भी हम लोग एक नए क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उसके पहले, नए क्वेश्चन के शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ लिखना शुरू करिए। आइटम्स दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
इसमें क्या है, आइटम्स दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, विच मीन्स ये जो लाइन आइटम्स हमारे पास रहेंगे ये हमको कॉस्ट शीट में नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, किसको कहाँ इंक्लूड करना चाहिए, किसको एक्सक्लूड करना चाहिए। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो ये रहेगा कि किसको कैसे कौन से लाइन आइटम्स रहेंगे उनको हमको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट लिख लीजिए, एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, अब एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? एबनॉर्मल कॉस्ट बेसिकली आपका जो भी बिजनेस के नेचर में नहीं हो, इन द सेंस नॉर्मल रूटीन बिजनेस में नहीं होता हो, उसको आप एबनॉर्मल कॉस्ट बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, अगर मान लो आपका फ्रूट्स में बिजनेस है, ठीक है, आप फ्रूट्स के बिजनेस में हो एंड फ्रूट्स के बिजनेस में आपके फ्रूट्स जो हो रहे हैं वो खराब हो जा रहे हैं, कभी आप बेच नहीं पा रहे हो, खराब हो जा रहा है, तो क्या वो लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? द आंसर इज नॉर्मल है। वाई इट इज नॉर्मल? नॉर्मल इसलिए बिकॉज वो बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि हम पेरिशेबल गुड्स में डील कर रहे हैं एंड पेरिशेबल गुड्स आर बाउंड टू गेट पेरिश, तो खराब होने के चांसेस रहते ही हैं, तो दैट इज नॉर्मल। अब अगर वहां पे ऐसा हो कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया एंड उसके वजह से हमारे क्या हुए, जो फ्रूट्स है वो खराब हो गए, तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अर्थक्वेक आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? द आंसर इज एबनॉर्मल है। सेम फॉर अर्थक्वेक, मान लो अर्थक्वेक के जगह चोरी हो जाती है, विच इज थेफ्ट हो जाता है, अगर आपके शॉप में थेफ्ट हो जाता है, क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? द आंसर इज एबनॉर्मल है। तो ऐसी जो कॉस्ट जो नॉर्मल बिजनेस नेचर में नहीं हो वो आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसको आपको अगर एबनॉर्मल कॉस्ट कुछ दिया होगा तो हमको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है पेनल्टी, फाइन्स, डैमेजेस। ठीक है, पेनल्टी फाइन्स एंड डैमेजेस। तो पेनल्टी फाइन एंड डैमेजेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल पेनल्टी किस चीज़ की लगती है? फॉर एग्जांपल आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसकी वजह से आपके हजार्डियस केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको कुछ फाइन लग गया, आपका कुछ लेबर लॉज होते हैं, आपने लेबर लॉज फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से प्लांट को फाइन लग गया, तो क्या ये फाइन जो है वो हमको अपने कॉस्ट में जोड़ना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस रूटीन के खर्चे नहीं है, ये पेनल्टीज है, ये एक्स्ट्रा, मतलब ये जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमको ये एक्सपेंस इनकर नहीं होता है, तो इनका कॉस्ट जो है वो भी रूटीन इन नेचर नहीं है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज कैश डिस्काउंट्स, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। तो कैश डिस्काउंट्स आपको क्वेश्चंस में ऐसे बहुत पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे कैश डिस्काउंट्स आपको मिलेगा कि 2% कैश डिस्काउंट्स है, 5% कैश डिस्काउंट्स है, 10% कैश डिस्काउंट्स है। सो शुड वी इंक्लूड दोस 10% 5%? नहीं, बिकॉज क्या अगेन उसमें क्या होता है, दो तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट्स आपका क्या होता है, वो आपका बिजनेस नेचर का होता है। ठीक है, एंड कि आप इतने दिन में वो कर दो, क्या बोलते हैं बिजनेस में, अगर आप इतना क्वांटिटी खरीदोगे तो उसको आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उसको आपको फैक्टर इन करना है। बट क्या कैश डिस्काउंट्स का क्या करते थे हम लोग? कैश डिस्काउंट्स का हम लोग अलग से ट्रीटमेंट लेते थे, क्योंकि वो बिजनेस नेचर नहीं, वो पेमेंट की वजह से आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, उसकी वजह से कैश डिस्काउंट करेगा मिलेगा, करेक्ट? तो वो क्या हुआ, बिजनेस के नेचर में नहीं हुआ, वो आपने पेमेंट जल्दी की इसके वजह से हुआ। बिजनेस के नेचर में कब होता, जब आपने क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करके कोई डिस्काउंट अवेल की, या या आपने कुछ महंगे गुड्स खरीदे जो अपने स्पेशल आपने नेगोशिएट किया, तो वो सारे आपके डिस्काउंट्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के नेचर में। कैश डिस्काउंट्स बिजनेस के नेचर में नहीं है, बिकॉज आपने पैसे जल्दी दे दिए, इसके वजह से आपको डिस्काउंट मिल गया। तो एनीथिंग विच इज कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस विल नॉट इंक्लूड देम इन कॉस्ट शीट। ठीक है, एंड फोर्थ इज इनकम टैक्स, डोनेशंस एंड बैड डेट। ठीक है, अगर आपको इनकम टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, या डोनेशंस पे कर रहे हो, या बैड डेट्स हो रहा है आपको, तो ये भी क्या होगा, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा।
रीजन बीइंग अगेन क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल इन नेचर होता है, तो उसका कॉस्ट जो होगा वो कभी भी हम लोग पीएनएल में नहीं लेते। अगर आप वहाँ पे भी अकाउंट्स में भी देखोगे तो इनकम टैक्स का सेपरेटली एडजस्टमेंट किया जाता है एंड उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता है। तो सेम गोज फॉर डोनेशंस भी, डोनेशन एंड बैड डेट्स। बैड डेट्स अगेन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कोर बिजनेस के ऊपर फंक्शन करते हैं, ना कि अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव नहीं। अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से है तो ये हमारा लॉस है तो हमको अकाउंट फॉर करना चाहिए, बट हमको क्या है कोर बिजनेस पे फोकस करना है कि हमको ये अलग दूसरे चीज़ों का नुकसान नहीं ले रहा है, दूसरी चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल जो जो भी है, जैसे बैड डेट्स हो गया, दे आर नॉट एबल टू पे, बट उस चीज़ को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज वो हमारा बिजनेस का नेचर नहीं है। वो सेपरेट है कि वो हमको लॉस हो गया क्योंकि सामने वाला पे नहीं कर रहा है, बट वो हमारा कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। अगर हम लोग लेंडिंग्स में होते तो ये हमारा कोर बिजनेस का पार्ट बनता, बैड डेट्स, बट हम लोग लेंडिंग्स, लोन्स एंड लेंडिंग्स में नहीं है, तो ये हमारा कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो अगर आप ये देखोगे जो 4 आइटम्स हमने यहाँ पे मेंशन किए, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर बिजनेस, दैट इज व्हाई दे शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर व्हाट कॉस्ट। ठीक है, दे शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप देखोगे सो दिस हैज कम इन पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर पेपर November 20, and this was for how much marks? This was for 10 marks. So now we are going to solve what exam questions. ठीक है, तो exam questions are different fun because this is the question that you can expect to see in the exams. ठीक है, that is why solving these type of questions and developing a conceptual clarity is utmost important. ठीक है, now let's start with the question. She manufactures two types of boxes. First is super and normal. The cost data for the year ended 31st March 21 as follows. तो यहाँ पे हमको साल भर का डेटा दिया हुआ है. First is direct material, which is 12 lakhs, direct wages 6 lakh 72, production overheads 2 lakh 88, and total is 2160. Okay, but if you see the question हमको स्टेट करा है टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विच इज सुपर एंड नॉर्मल. तो हमको यहाँ पे ना सेपरेट करके कॉस्ट नहीं दी है, यहाँ पे दोनों का इंक्लूड करके हमको कॉस्ट दिया हुआ है, विच मीन्स दिस 12 lakhs इंक्लूड कॉस्ट ऑफ बोथ सुपर एंड नॉर्मल. सेम फॉर डायरेक्ट वेजेस, सेम फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू. There was no work in progress at the beginning or at the end of the year. So we are relieved. जो हमारा पॉइंट नंबर 5 होता था विच इज वर्क इन प्रोग्रेस, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करना था, अब नहीं करना पड़ेगा बिकॉज देर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP. ओके, नाउ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इन सुपर वॉज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल, विच मीन्स जितना भी हमको मटेरियल लग रहा है बनाने के लिए उससे ट्वाइस मटेरियल लगता है हमको सुपर बनाने में. ठीक है, ओके. फिर आता है कि 2% कैश डिस्काउंट वॉज रिसीव्ड फॉर द पेमेंट मेड विद इन 30 days टू द क्रेडिटर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. ये पॉइंट हमने अभी भी पढ़ा हुआ है क्या? टेक अ गेस. द आंसर इज यस. हमने अभी पढ़ा था वी शुड एक्सक्लूड दिस कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज दिस इज कैश डिस्काउंट, दिस इज टू बी excluded. It should be excluded. ठीक है, then next point is direct wages per unit for normal where 60% that of super. अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि डायरेक्ट वेजेस ऑफ नॉर्मल वे 60% ऑफ सुपर, तो अगर सुपर में वेजेस, एग्जाम्पल सुपर में वेजेस अगर 100 है तो नॉर्मल में वेजेस कितना होगा? 60% ऑफ 100 विच इज 60 रुपीज़. विच मीन सुपर के लेबर को अगर हम लोग 100 पे कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल के लेबर को वेजेस हम लोग 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं. देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट was at same rate for both the types of boxes. Okay, सेम रेट पर यूनिट, रेट सेम था दोनों का. ओके, administrative overhead was 200% of direct labor for each type. Administrative overhead was 200% of direct labor of each type, which means क्या? इसका भी हमने एक पॉइंट लिखा था, इसका भी हमने नोट लिखा था. आंसर क्या नोट लिखा था? इसमें हमने नोट लिखा था, इफ आई ब्रिंग यू टू, यहाँ पे हमने एडिशनल नोट लिखे थे
क्वेश्चन में क्या बोला था कि एडमिन ओवरहेड्स में, अगर एडमिन ओवरहेड में अगर लिखा हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन तभी हमको कंसिडर करना है, अदरवाइज अगर कोई लिंक है एडमिन ओवरहेड कॉस्ट का टू डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर, अगर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर से अगर लिंक है एडमिन ओवरहेड्स की कॉस्ट, तो व्हाट विल अज्यूम दिस एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ओके, तो दिस विल कंसिडर एज related to production. Then we have selling cost, one per super type. ठीक है. Then is production and sales. तो ये we have the table of production and sales. Production में we'll have 60,000 units, 180,000 units for super and normal, and sales only super which is 54,000. ठीक है. Selling price was 30 per unit of super. Company was also involved in copyright infringement case related to manufacturing process of super production. As per the verdict, it has to pay penalty. Now we have arrived to a word of penalty. Now again, does this click to you? कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे what is not to be included in the cost, which is also includes penalty, fines and damages. So should we include? The answer is no. We'll not be including this 50,000. Now they are asking you to prepare a cost sheet of super showing cost per unit total cost, profit per unit total profit. ओके, इट मीन्स हमको जो बनाना है सिर्फ और सिर्फ सुपर का कॉस्ट शीट बनाना है, नॉर्मल का नहीं बनाना है, एंड दोनों का कंबाइंड भी नहीं बनाना है. वी जस्ट नीड टू मेक दिस फॉर सुपर. ठीक है, डन. नाउ वील नीड टू मार्क व्हाट इज पॉइंट 1. तो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 4, बिकॉज 1 इज हमारा डायरेक्ट मटेरियल, 2 इज वेजेस, 3 इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 4 इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, 4 वी हैव गॉट. देन अगेन यहाँ पे जो पॉइंट है दिस इज अगेन 1, दिस पॉइंट इज, this point is related to point 2, then this point is related to 3. ठीक है, not 3, sorry, this point is related to 4 because 3 is direct expenses, this is production overheads, so this is related to 4. ठीक है. अब when what helps is because of this, now when I start the question I need to start with what? Direct material. Now since I've marked all the 1 points, I can directly go on reading the 1 point and ignoring the rest of the question. हमको पूरा बाकी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 1 वाला पॉइंट देख लेंगे बिकॉज वी हैव मार्क्ड. ठीक है, कूल. लेट्स ओपन योर नोटबुक, है ना, एंड देन लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग द कॉस्ट शीट. ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, देन वी हैव सॉल्यूशन. We need to prepare 2 columns. Reason being because we'll have to calculate per unit as well as total cost. So we need to calculate both, so we'll have to have 2 columns. Okay. We'll start writing down particulars. Then we have per unit, and then we have total cost.
first point is what? First point we need to write direct material. Okay. Direct material, now we'll have working note 1. Now have this page for your cost sheet, and next page mein you can start making your working note. Working note 1. Now we need to look what all points do we have. The first is point number 1. We have total the direct material, okay, which is 12 lakhs, but it includes both super and normal. Okay. Now the second point over here is direct material cost per unit in super was twice as much direct material in normal, which means जो हमारा super का जो direct material लग रहा है उसमें twice the number of materials लग रहा है than compared to normal. Okay. तो if we assume normal में we use x units, ठीक है, because we don't have units, so we'll assume normal has x units, then super will require 2x number of units. Okay, this x could be anything. Right now we don't know what is the number of x, what is the number of units that is required to make normal and super, but we know whatever the amount is, it is, if normal is 1, then this is twice of super is twice of normal, so this will be 2x. Now making this equation, we have number of units. Okay, we need number of units for production. We have super 60,000 units for production, and normal will be 80,000, 1,80,000. So we have produced 1,80,000 of normal units, and we have produced 60,000 of super units. So what will happen is this 60,000 will require 2x, and this 1,80,000 will require 1x, and this will give me how much? This will give me total cost of 12 lakhs. Okay, great. Then on solving this, this becomes 1,20,000 x plus 1,80,000 x is equals to 12 lakhs. Therefore, x is equals to 12 lakhs divided by 1,20,000 and 1,80,000, which is 3 lakh. So this x is equals to 4 rupees. Now normal needs x, which is equal to 4, but super needs 2x, which is equal to 8. Okay, therefore multiplied by 60,000 units, this comes to 4,80,000. Correct? So now this per unit will be 8 rupees, and this will be 4,80,000. Okay, this will be 4,80,000. Done. Now coming to next point. Next point is what? Direct labor or direct wages. Now we'll have working note 2 for this. Now what does point number 2 say? Direct wages will have total cost, again 6,72,000, this 6,72,000, and we also have a point wherein it says direct wages per unit for normal where 60% for those of super, which means if we prepare working note 2, now this says कि this is 60% of what super we pay super, if you are paying x wages for super,
we are paying 60% of that for normal, which means now we in here we'll have to assume super to be x and normal to be 60% of x, which is again 0.6x. Okay. Now can we make the equation, because we have total cost? Okay. So since we don't have any hours mentioned over here, we'll assume the same number of hours required for both super and normal. So which means again this will be related to what? Their units of production. So 60,000 for super multiplied by x plus 1,80,000 units produced for normal multiplied by 0.6x. This will give me what? 6,72,000. Correct? This will give me 6,72,000. Now upon multiplying, this will be 60,000x plus 180 into 0.6, which gives me 1,08,000 is equals to 6,72,000. Now x is equals to 6,72,000 divided by 168, correct? 6,72,000 divided by 168. This gives me x is equals to 4, which means super is equals to 4 per unit. Do we require for normal? The answer is no. We don't require for normal because we need to prepare the cost sheet for super. Okay. तो यहाँ पे wages में हमारा कितना आ जाएगा? 4 rupees. And हमारे units कितने हैं? 60,000. तो 60,000 into 4. 60,000 into 4, which gives you 2,40,000. Now this gives you prime cost of 7,20,000. And per unit you can simply add, this is 12 and this will result in prime cost, because we don't have any direct expenses का point. ठीक है. Now 3 points थे. First is direct. So direct material done, direct labor done, direct expenses. There is no direct expenses, therefore prime cost. So we are done. Now the second line item. What is the second line item? Second line item is, then we have factory, WIP and admin. So for factory, write down factory overheads. This will again be working note 3. Now what point do we have for factory overheads? We have this point number 4, factory overhead, total is again 288, and production overheads per unit. Production, point number 4, production overheads per unit was at the same rate for the both types of boxes. Okay. So which means this will be in the number of proportion of what? Number of proportion of units, production units के proportion में will have to what? Divide the production cost, because यहाँ पे production overheads per unit was at the same rate for both the types of boxes. Okay. So which means we need to take a proportion of 60 and 180, sorry. So working note number 3. Working note 3, which is production overheads. Okay. Now production overheads is same number of units. So super is what? Units, 60,000. Normal is how much units? Which is 1,80,000. Okay. This gives me how much? A total cost of 2,88,000. Which means 60,000x plus 180x gives me 2,88,000, because they are in same, per unit is same. Okay.
Now this will give me 2,40,000 x is equals to 2,88. Therefore, x is equals to 288 divided by how much? Divided by 2,40,000. Now this will result in 288 divided by 240, which is 1.2. Okay. So what we'll write down? We'll write down 1.2 per unit and 1.2 into 60,000, which will give me what? How much? Which will give me 72,000. Okay. So adding this will give me how much? Adding this will give me 7,92,000. And this will be how much? 13.2. Since do we have WIP adjustments after factory overheads? We have WIP. Do we have WIP over here? The answer is no. We don't have WIP. So when we don't have, then what will happen is कि जो हमारा gross factory overheads था will result into net factory overheads. So this will be net factory cost. Sorry, net factory cost, because since there is no WIP adjustment. After this, factory WIP admin. So admin, what we need to ensure that it is related to cost of production. Now, do we have admin overheads related to cost of production? Yes. Point number 5. Point number 5, administration overheads is 200% of direct labor for each type. Okay. 200%. So what you can do is either you can take and multiply it by 2. Either you can take per unit 4 and then multiply it by 2, because it is 200%. So if you do 4 rupees into 200%, this will result into 8 rupees. Or you can, what you can do is 240, which is over your direct labor ka expense. 240 into 200% will also be 480. So either ways, you can either multiply 200% with 4 or 2,40,000 into 200%. That will give you admin overheads related to production. Administration overheads. This will be what? 8 rupees. Either you do 4 multiplied by 200% or 2,40,000 into 200%. That will result into 4,80,000. So this will result into 21.2, and this will result into 480 plus 792 is equals to 12,72,000. Okay, this will be what? This will be cost of production. Okay, this will be cost of production. Great. After admin overheads, what do we have? We have fixed goods and selling and distribution. So fixed goods, do we have any points for fixed goods? The answer is there is no point mentioned for fixed goods, but there is a catch. What catch is it? Catch ये है कि you see प्रोडक्शन आपको दिख रहा है, प्रोडक्शन आपका सुपर का कितना हुआ था? 60,000 प्रोडक्शन हुआ, एंड सेल्स कितना हुआ सुपर का? 54,000. which means what? Which means there is a closing stock of how much? 6,000, because we made, हमने बनाया 60,000, but we sold how much? 54,000 units, which means we have how much in the closing stock? We'll have 6,000 units in closing stock. Great. So now 6,000 units we'll have in closing stock, but how much does it cost? Now we know closing stock is always calculated basis the cost of production. The cost of production is total number of units that we produced, which was how much? Which was 60,000. We produced 60,000 units. Now this is the cost. Now this 12,72,000 is the cost of total 60,000 units.
आउट ऑफ दैट वी नीड टू, हमको क्या चाहिए, हमको 6000 यूनिट्स का कॉस्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो राइट डाउन ओवर हियर, ओपनिंग स्टॉक of finished goods and then you'll have closing stock of finished goods. Now opening is what? Opening is blank. Closing is how much? Closing may will have working note. Working note number 4. Working note number 4. Now go to your working note wala sheet and write down this point. Working note 4. Okay. नाउ व्हाट हमको क्या कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट 4 में, हमको वी नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, वी नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। हाउ मच यूनिट्स डिड वी प्रोड्यूस, हमने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, हमने 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। एट व्हाट कॉस्ट, कितने कॉस्ट में हमने प्रोड्यूस किया, हमने प्रोड्यूस किया 12,72,000 12,72,000। नाउ व्हाट डू वी नो, वी नो कि हमका क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है, वी हैव 6,000 एज क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, सो द वैल्यू विल बी हाउ मच, which will be 12,72,000 divided by how much, 60,000 units multiplied by 6,000 units, this will be 1,27,200. Okay, now we'll put this value in the closing stock, which is 1,27,200. Now this 1,27,200, this is for how much units, this is for 6,000 units, so per unit it will be 21.2. Okay. Now this will be 12,72,000 minus 1,27,200. This will give me 11,44,800. Now cost per unit will be same because यहाँ पे we'll have 60k units, यहाँ पे we have how much 6k units, therefore this resulted into 54k units. Now there won't be difference in any per unit. Per unit में हमारा कुछ भी difference नहीं होगा, total cost में बस change होगा। तो आफ्टर फिनिश गुड एडजस्टमेंट क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, हमको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हमको क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बचा है विच इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पॉइंट है यहाँ पे, द आंसर इज यस, सेलिंग कॉस्ट वाज 1 रुपीज पर सुपर टाइप, सुपर वी सोल्ड, हमेशा व्हाट वी सेड कि सेलिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल विथ टू मल्टीप्लाइड विथ हाउ मेनी यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जितना हमने बेचा उसका ही कॉस्ट लगेगा। सेलिंग कॉस्ट में अगर 1 रुपीज लग रहा है तो किसका कॉस्ट लगेगा, वो हमेशा हमें हमारे सोल्ड यूनिट्स पे लगेगा। हाउ मच इज द सोल्ड यूनिट्स, इट इज 54, विच मीन्स 1 रुपीज पर this 54,000. Now this will result into 800 1198 800 divided by 54,000 units, this will be 22.2. this will be cost of sales। क्या बोला हमने, बेचने के लिए जितना हमारा अभी तक खर्चा हुआ है, ठीक है, टोटल बेचने के लिए हमारा कितना खर्चा हुआ है विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है।
देन इसमें डू वी हैव सेल्स, मतलब कितना सेलिंग प्राइस है हमारा, द आंसर इज यस। हमको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, वी हैव 30 रुपीज। If we see point 8, this is selling price 30 rupees for super. So if we multiply 30, so sales will leave a line. Sales will be 30 unit into 54,000. 30 unit into 30 rupees into 54,000, which will be 6,20,000. Then profit will be how much? Profit will be 16,20,000 divided by subtracted by 11,98,800, which will be 421,200. This will be 7.8. This reaches us to answer कि how much profit are we making per unit, which is 7.8. What is the profit, which is 4,21,000. Okay. So we have arrived. हमारा profit per unit how much? So if we go to the question and we see what is being asked, do we have cost per unit? The answer is yes. Do we have total cost? The answer is yes. We have both. We have profit per. Do we have profit per unit? The answer is yes. Do we have total profit? The answer is yes. This is cost per unit and total cost. This is profit per unit and this is total profit. Okay, got it? So now we are done with question 14. Now write down if you have missed anything, complete this table. I hope you have completed. ठीक है. Now there are two homework questions, ठीक है, which is related to the questions that we have solved. ये 14 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड व्हिच इज वेरी सिमिलर. आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आपको घर में जाके इसको सॉल्व करना है सो दैट यू नाउ गेट अ ग्रिप ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको क्लिक आ जाएगा, बट आपको सिमिलर डिफरेंट नंबर्स के साथ अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको क्लिक नहीं करेगा. एंड दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग you'll have a grip over this subject, otherwise आपका ये grip छूटता जाएगा. ठीक है, so take out some time and solve these questions. So the homework question is question 11 we have solved now. Question 7 and 11. So question 7 is your homework. This is your homework. You see similar points but different figures. ठीक है, super pen, normal pen. This was asked in again previous year November 20. ठीक है, question 7 and then you'll have question 11. Now this is also homework.
क्वेश्चन 11, ठीक है. जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट कि डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट वेजेस एंड दिस इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ठीक है, वो सीक्वेंसिंग आई थिंक ऊपर नीचे हो गया. नाउ दिस इज रिलेटेड दिस इज दिस एंड डायरेक्ट मटेरियल इज दिस. ठीक है, एंड रेस्ट ऑल सेम ही है. ठीक है. सो इफ यू सी, अगर देर इज अ ट्रेंड कि नवंबर 20 में पूछा गया, नवंबर 22 में पूछा गया, तो देर इज अ ट्रेंड ऑफ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम. सो मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मस्ट सॉल्व. Now coming to question number 12. Now we'll solve question number 12. Now question number 12, this was asked in previous year, May 23, for how much marks? 10 marks. Previous year May 23, which was, मतलब May 23 is not far, मतलब आपका May 25 हो गया ना, तो it was 3 years ago. 3 years ago this question was asked in exam. So this is also important. Okay. Now the following information is available from SN Manufacturing Limited for the month of April 23. Okay. Now what do we have? We have opening stock of finished goods, but here we don't have amount. यहाँ पे हमारे पास क्या है? Amount नहीं है, but हमारे पास क्या है? Units दिए हुए. And 30th April का भी हमारे पास कुछ नहीं है. Now thing to note is this is for month. As I told you कि हम जब भी solve करेंगे we'll look at so please once again recap the closing stock. Okay. So, okay, let's recap the closing stock once again. Finished goods का, so finished goods का if you see, finished goods में we there is no point mentioned for the finished goods कि हमारे पास कुछ finished goods का कहीं पे भी point mentioned नहीं है, but we'll have to check कि हमारे पास कोई situation ऐसा बन रहा है क्या जिसमें finished goods हमारा निकल के आ सकता है. तो if you see production was how much? Production was 60,000 and what was sales? Sales was 54,000, which means there is क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज हमने बनाया 60,000 यूनिट्स था, हमने बेचा 54,000, मतलब 6,000 यूनिट्स हमारे पास ही बच गए, हमारे पास ही रह गए. सो दैट इज हाउ वी अराइव्ड एट अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 6,000 यूनिट्स. दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग टू वैल्यूएशन पार्ट. ठीक है, और बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, इफ यू हैव 100 पेन्स एंड यू हैव जस्ट सोल्ड 6 पेन. ठीक है, हाउ मच पेन आर यू लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ 4 पेन्स. सो दैट इज हाउ वी अराइव्ड एट द नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे वी produce 60,000 units and we sold 50,000 units, which means 6,000 is still remaining with us. Okay, so number of units we are clear. Now the question is valuation. How do we value? Now, if we come to the cost sheet, which I explained earlier. Now, finished goods. Now, opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. तो ये हमारे पास किसके पास आता है, किसके बाद आता है? The answer is cost of production. We make this adjustment of finished goods after what? Cost of production. Now what is cost of production? Cost of production means all the cost that we incurred to produce the units. ठीक है, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमको कॉस्ट इनकर हुआ वो सारे कॉस्ट वी टेक डायरेक्ट एज वेल एज वी टेक इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओके, we take both direct and indirect costs. Okay, now the cost of production means जितना भी हमने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट कितना आया. फिनिश गुड्स का अगर हमको वैल्यूएशन निकालना हो, फिनिश गुड्स का हमको कॉस्ट निकालना हो, तो वो क्या होगा हमारे पास? जितना भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया उसका कितना कॉस्ट लगा. ठीक है,
तो we produce 60,000 units. Now the question is कि what cost did we incur to produce the 60,000 units? तो will incur to what? Will incur to cost of production. Will incur to cost of production. कि cost of production which means ये 60,000 जितना भी हमने units produce किया, 60,000 units that we produced, we had to incur this 12,72,000 cost for these 60,000. Okay. So now if I tell you the total cost for 60,000 units was 12,72,000. How much will be 6,000 units? Which means we'll have to first calculate per unit. So what we did in the working note, if you see working note में what we did, units we had 60,000 and ये units को बनाने के लिए हमको कितना cost लिया हुआ? हमको cost लिया, the cost we incurred to produce this was 12,72,000. ठीक है? Now 12,72,000 divided by 60,000 will give me my per unit cost. Will give me my per unit cost. My per unit cost, यहाँ पे भी हमने निकाला होगा, per unit cost was 21.2. Now this 21.2 and 6,000 is left with us. So 6,000 into 21.2 will give me what? 1,27,200. 1,27,200. Okay. Now there might be a question, why did we take cost of production and why not cost of goods sold या cost of sales हमने क्यों नहीं लिया? ठीक है, cost of sales क्यों नहीं लिया, सिर्फ cost of production क्यों लिया? तो tell me, when you have not sold something, can you take the cost? Selling and distribution क्या है? Selling and distribution is once we have advertisement, once we have done the advertisement, we have done the distribution, we have delivered it to the final customers. तो final customers को deliver अगर हम लोग कर रहे हैं, तो फाइनल कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसके ऊपर हमको वो कॉस्ट लगानी चाहिए. ठीक है, तो क्या हमारे पास जो क्लोजिंग फिनिश गुड जो हमारे अभी फैक्ट्री में ही है, क्या उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर हुआ है क्या? द आंसर इज नो. बट क्या उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर हुआ है? द आंसर इज यस. दैट इज व्हाई वी टेक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फिनिश गुड्स एंड नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इसने नहीं देते बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे फैक्ट्री में ही है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कस्टमर को, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इसका कॉस्ट क्या हमको जोड़ना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू पे? द आंसर इज नो. हमको क्या जोड़ना चाहिए इस पे? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर हुआ है. दैट इज वाई प्रोडक्शन कॉस्ट का हमने यहाँ पे वो लिया हुआ, कॉस्ट लिया हुआ, विच इज 1,27,000. इट इज नाउ क्लियर? Do you have any doubt? Now coming to the next question, which is question number 12. Great. तो let's now start with question number 12. No doubts. अभी यहाँ पे ये वाला question solve करते हैं. ठीक है. Opening and closing inventories. So opening and closing inventories, the finished goods given here is in units 2,500 units, and there is question mark in closing stock. So we don't have the value of closing stock. Also we don't have the units of closing stocks. But we know how to calculate. We'll calculate. Great. Now the second is cost of raw material. The cost of raw material is again 0.1. Which is 42,500 and this is 38,600.
Great. We have also have work in progress. Work in progress is what? Point number 5. We have both the amounts, 42,500 and 42,800. Okay. Now raw material purchase 6,95,000. This is again point 1. Carriage inwards is again point 1. Direct wages is point 2. Royalty for product paid for production, which is again direct expense. Now this is the question where we have direct expense also. This is what? Point number 3. Then we have purchase of special design molds and patterns. Now estimated life is 12 production cycle, which is great. Okay. This is again direct expenses. Any special design, if we pay for any special design, so if you see cost sheet may we have mentioned what is direct expenses. Note 3 में any royalty paid will be in this. Any cost of specific designs or drawings will be considered under direct expense because this is attributable to units produced. Okay, great. Then we have power fuel. Power fuel is again what? Again direct expenses. ये भी हमने पढ़ा था. This we also studied. Power fuel, why it is considered direct expense? Because this is incurred per unit. Again, there is a difference between power fuel and electricity. Electricity will come under factory overheads, but power fuel will come under direct expense. Because imagine अगर कोई factory है जिसमें आपको पेट्रोल डालना पड़ रहा है to produce units. So that will only happen when you are planning to produce units, then only you will put fuel. Otherwise अगर जब units नहीं बन रहे हैं तो अब मशीन स्टॉप रहेगा, फ्यूल कंजम्पशन स्टॉप रहेगा. करेक्ट. बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में वैसा है क्या? द आंसर इज नो. लाइट्स जो है फैक्ट्री का वो फिर भी जलता रहेगा चाहे आप यूनिट्स बनाओ नहीं बनाओ. तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड पावर फ्यूल इज कंसिडर्ड अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस. ओके. Then we have research, development, improving production, which is again great. This is point number 6. This will come under admin overheads related to production. है ना? Then we have primary packaging. This is also related to admin overheads related to production. Then we have administrative overheads. Now since nothing is mentioned in this, what we'll assume? We'll assume this to be general administrative overhead. Okay. Then salary and wages of supervisor and foreman. Supervisor is where? Supervisor stays in factory. Foreman stays in factory. Therefore, this is what? Wages, and this will be point number 2. We have opening stock of finished goods, which is valued to be 8 rupees and 5 paise. During the month, 1,52 units were produced and 1,52,600 were sold. Great. Now we can calculate closing stock of finished goods, which means हमारे पास ओपनिंग में कितना था? 2,500 यूनिट्स. हमने बनाया कितना? How much did we produce? Which was 1,52,000. And how much did we sold? We sold 1,52,600. Which means opening plus production minus what we sold will give me our closing stock. ठीक है. Now the question mentioned closing stock of finished good is to be valued at relevant months cost of production. See, यहाँ पे क्वेश्चन ने मेंशन किया हमको that we need to value at cost of production. If अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं भी करता तो हम किस पे वैल्यू करते? हम वैल्यू करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. ठीक है. क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया, नहीं भी मेंशन करता तो भी we were smart enough to calculate on cost of production. The company follows FIFO method. Selling and distribution expense to be charged at 20 paise per unit. Assume that one production cycle is completed in 1 month. ठीक है. Prepare a cost sheet for the month. Again यहाँ पे we need to prepare for the month. Which means अगर हमारे पास कोई भी ईयरली का एडजस्टमेंट रहेगा we need to make it to monthly.
For April 30, showing various elements of cost, raw material consumed, prime cost, cost sheet का ही है. Calculate the selling price per unit if the profit charge is 20% on sales. Okay, we need to calculate what selling price. We have the cost, we are told कि how much profit is needed, तो हमको क्या करना है, selling price calculate करना है. ठीक है, we'll start. Now take out your notebooks again and then we'll start with the next. Meanwhile, you guys draw the format. I'll will solve in the next page. Let's draw some lines. We have particulars, then we have total cost. Great. The first point we have is direct material. This will be working note 1. Okay. Again, direct material. What points do we have? We have opening stock 42. We have opening as 42,500, closing as 38,600. Great. And then we have what? Direct raw material purchased, which is 695. Then we have carriage inwards, which is 36,200. Any other points related to point 1? The answer is no. Got it. So we have all these points. Okay. Now we are used to this. So we'll quickly calculate working note 1, which states key start with opening stock of raw material. ठीक है, बिकॉज विल हैव ओपनिंग, फिर हम क्या करते होंगे, फिर हम परचेज करते होंगे, फिर हमारा कुछ बच जाता है. करेक्ट. विच ऑल्सो हैपन्स इन योर हाउस होल्ड ऑल्सो. किचन में क्या होता है, वेन एवर आर मदर्स ऑर्डर फॉर अ ग्रोसरीज, तो वेन एवर देर इज सम ग्रोसरी लेफ्ट, उसके बाद ही वो ऑर्डर करते हैं. तो सम ग्रोसरी लेफ्ट, देन वी ऑर्डर समथिंग एंड एट द मंथ एंड भी हमारे पास कुछ ग्रोसरी बच जाता है. तो दैट इज द सेम थिंग हैपनिंग कि ओपनिंग स्टॉक है, फिर हम परचेज करते हैं, जब थोड़ा सा ओपनिंग स्टॉक बच जाता है फिर हम परचेज करते हैं. Then what we do, we purchase and then we have closing stock.
तो which is 6,95,000 purchase, 42,500 and 38,600. Great. Opening stock we have 42,500. Closing stock we have 38,600. And during the year purchase we have 6,95,000. ठीक है. Are there any direct expenses that we incurred? Are there any direct expenses that we incurred? The answer is yes. Any direct expenses that we incurred is yes. Carriage inward, we have carriage inward. Carriage inward is how much? 36,200. So we'll add carriage inward. $36,200. This will give me how much? 42,500 plus 695 minus 38,600 plus 36,200. This is 7,35,100. 7,35,100. Okay. Now point 2, direct wages. Do we have any adjustment that is required for direct wages? The answer is no, because there is only one point, which is salary wages of supervisor and foreman, which is 28,000. And there is no further adjustment. So can we write directly 28,000? 3,22,000. Direct wages 3 lakh. Any other adjustments that we have? Okay, so we have two points, right? Which is 2 and 2 over here. So we have adjustments. So यहाँ पे we have direct wages paid, which is 3,22,800, correct? Which is direct wages paid 3,22,800. We also have another salary and wages, which is supervisor and foreman, which they work in factory. Okay, but again I told you one point, that are they directly involved in production? Are supervisors, what is the work of supervisor? To supervise a group of people, to supervise 4-5 laborers, to supervise 10 laborers. So are supervisors directly involved? The answer is no, because they are not working for the production, they are supervising the people who are working, correct? And the second thing is, are they part of the production? The answer is yes, they are part of the factory, they are part of the factory production. So which means this will not come under 2. This will come under 4, factory overheads, because they're directly not part of what? They're not directly part of direct labor, but they're part of factory. So anything which is directly, they're not directly attributable but part of factory, will go into factory overheads. So which means the wages paid will 3,22,800. So 3,22,800. Okay. Then we have direct expenses. Do we have direct expenses? The answer is yes. We have multiple adjustments for direct expense. Now direct expenses, first is royalty. Second is purchase of special design. So this will be 35,800 and 153,600. Okay. Then we have power fuel, which is 70,600. Now there is a point and there's a point on purchases of special design molds and pattern. The estimated life is of 12 months. ठीक है, 12 months with 12 production cycle. And नीचे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है? नीचे if you see it is mentioned कि हाँ, one production cycle is completed in 1 month, which means 12 production cycles would mean 12 months, correct?
this will mean 12 months. So you are paying 1,53,000 for what? 12 months. So for 1 month, how much are you paying? So this is 153,600 divided by 12, which is 12,800. You are paying 12,800 for 1 month, and this is for 1,53,000. This is for 12 months. And what do we need to calculate? We need to calculate for a month and not for a year. If we had to calculate for an year, we'll be taking 1,53,600, but we are calculating it for a month. Therefore, we need to divide it by 12. So this is 12,800. So writing down, royalty is 35,800. Then we have 12,800. Then we have power and fuel, which is 7,600. 70,600. So adding this will come to 35,800 plus 12,800 plus 70,600. This will come to 1,19,200. This will give me total prime cost of how much? Adding all the line items, 3,22,800 plus 7,35,100. So this will give me 11,77,100. This is 11,77,100. Now comes point number 4, which is factory overheads. Do we have anything for point number 4? The answer is just 1 point. Correct? And there is no other point, just 1 point. This is point 4. No other point, which is 28,000, which means factory overheads 28,000. This is 12,05,100. This is again what? Gross factory cost. Now in order to reach net, what we need to do is, if we memory technique, which is direct, which is done, then we have factory, WIP and admin. So factory is done. WIP adjustment, do we have WIP adjustment? The answer is yes. We have WIP adjustment, work in progress, 0.5 is given. Then after that we'll have admin overheads related to production. Okay. Now opening stock is 42,500, closing is 42,800. 42,500 and 42,800. 42,500 and we have 42,800. Okay. This will be what? Opening stock of WIP. Then we have closing stock of WIP. Now after this will come to net factory cost. Which means 12,05,100 plus and minus. Therefore, this will result in this will result in 12,04,800. Okay, 42,500 minus 42,800. This will result in 12,04,800. Okay, net factory cost done. Then what do we have? Then we have admin overheads, which means cost related to production. Okay. Do we have any cost related to production? We have work in progress. Do we have any adjustments? Research and development. Okay. In the cost sheet, if we go and see the cost sheet which we prepared, right? What is cost of production? Cost of production includes what? Quality control, admin overheads, then we have research and development, and we have primary packaging cost.
which means these two line items come under cost of production. So we'll have to what? We'll have to include them into cost of production. So now cost of production will have plus both the line items, which is research and development. Research and development, why is it included? Because it is related to improving the production. And primary packaging cost. Primary packaging cost, and there is a difference between primary packaging cost and secondary packaging cost. What is the difference? Primary is needed for making that finished goods. For example, a packet of milk. Now the main raw material is milk, but the primary packaging is done in plastic. Okay, तो primary packaging जो plastic में होता है that is necessary, so therefore we'll have to add this cost. This will be how much? 31,680 and 6,920. 31,680 and then we have 6,920. This will result in how much? 12,43,400. 12,43,400. Therefore, this is cost of production. Okay, so this is cost of production. Now we are done with this. Then we cost of production के बाद हमारा क्या आता है? Finished goods and selling and distribution. Then we have opening and closing of finished goods. Opening stock of finished goods and then we have closing stock of finished goods. ठीक है, ओपनिंग का वी हैव यूनिट्स बट वी डोंट हैव द वैल्यू. करेक्ट, वी हैव यूनिट्स बट वी डोंट हैव द वैल्यू. सो विल हैव दिस यूनिट्स बट देयर इज एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट में ये लिखा है कि यूनिट जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है दैट टू बी वैल्यूड एट 8 रुपीज एंड 0.5 पैसे, 0.5 पैसे. ठीक है, तो विल व्हाट विल डू? विल मल्टीप्लाई. हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 8.05 multiplied by 2500. ठीक है, 8.05 multiplied by 2500. This will come down to 20,125. 20,125. Now closing stock will need working note. Working note 2. Working note 2. Calculation of finished goods. Calculation of finished goods. ठीक है, for calculation of finished goods हमको क्या देखना है? हमको देखना है सबसे पहले हमारे पास कितने यूनिट्स है. ओपनिंग यूनिट्स कितने थे? ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास थे 2500. ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन हमारे पास कितने यूनिट्स के थे? प्रोडक्शन कितने यूनिट्स के हुए? द आंसर इज द प्रोडक्शन वाज डन 1,52,000 and sold was 1,52,600. तो प्रोडक्शन वाज 1,52,000 and sold was how much? 1,52,600. therefore closing stock जो होगा वो हमारा कितना होगा? we'll have to add this, we'll have to add this and we'll have to subtract this. So this will come to 1,900 units. ठीक है, now since we got the closing stock, now after getting closing stock we need to calculate the value of closing stock, which is to be valued in what? Basis the cost of production. Now the cost of production, how much do we have the cost of production? We have 12,43,400. 12,43,400. But this is for how many units? This is for
टोटल प्रोडक्शन विच इज 1,52,000, जितना हमने टोटल प्रोडक्शन किया होगा उसका कॉस्ट है, दिस इज डिवाइडेड बाय 1,52,000, 1243,400 divided by 1,52,000 per unit is what? 8.18 multiplied by 1900 will give me how much? 15,000. 8.18 multiplied by 1900 will give me what? 15,542. Okay, so we'll reduce 15,542 value of closing stock. Now this will give me what? 12 lakh 47,983. 12 lakh 47,943. This will be what? Cost of goods sold. This will be what? Cost of goods sold. Okay. After this, we'll have selling and distribution overheads. And we'll also have what? We'll also have general admin cost, which is not related to production, because related to production will include in the cost of production, but अगर general होगा तो हम लोग general में add करेंगे, अगर कुछ नहीं mention होगा तो यहाँ पे general overheads is what? 46,765. Great. And जो हमारा क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है वो कितना है? 20 पैसा पर यूनिट. ठीक है, 20 पैसा पर यूनिट. तो विल मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेलिंग में 20 पैसा पर यूनिट इज 1,52,000. 1,52,000. हाउ मच डिड वी सोल्ड? 1,52,600. 1,52,600. 1,52,600 multiplied by 0.20 paise, which gives me 30,520. Correct? 3520. And the next cost is how much? Which is 46,765. Now this gives me cost of sales. Cost of sales would be how much? 13 lakh 25,268. ठीक है. Then we have profit, then we have sales. Now there is a point of sales. What does it say? Selling price per unit if profit is charged 20% on sales. 20% on sales. But do we have sales? The answer is no. We don't have sales. What do we have? We have cost. So we have to change this number to cost. Now this 20% in sales will have to change it to what? 20%. मतलब what is the percent on cost? Okay. Working note 3. Given in the question is 20% on sales. So how much on cost? Because what we have cost. So what we'll do, we'll assume. So for any type of this adjustment, अगर ऐसा adjustment आता है तो हमको क्या चीज़ ध्यान में रखना है? हमको पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है कि cost कितना है, selling price कितना है, and profit कितना है. तो जो भी हमारे पास दिया होगा उसको हम लोग 100 एज्यूम करेंगे. तो 20% ऑन सीरीज दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस हम क्या एज्यूम करेंगे? 100. तो इसका 20% हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. विच मीन्स 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा? मेरा कॉस्ट. अगर मेरे को ऑन कॉस्ट देखना, परसेंटेज ऑन कॉस्ट देखना होगा तो विच विल बी व्हाट? 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100. दिस विल बी गिव हाउ मच? 25%. ठीक है, विच मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ? 20% ऑन सेल्स बट 25% ऑन कॉस्ट. सो दिस विल बी 25%. तो 13,25,268 मल्टीप्लाइड बाय 25, 331,317
which gives me what total sales of 1656,585. ठीक, per unit how much? Total number of units sold we have 1,50,000, 1,52,600. ठीक है, 1,52,600. So we'll divide this by 1,52,600 units. This will be resulting in 10.86. So selling price per unit is 10.86. Great. Now this question is done. So this was question number 12. Question 12 is what? Done. Okay. Now we'll do next question. Okay. Meanwhile, you can write this down if you've missed anything. Next question will be question number 9. Now let's start with question number 9. Question number 9 में just make an adjustment. ठीक है. What adjustment? You can write down कि total production is 1,000 units. Total production is 1,000 units. ठीक है. चलो, let's start. G Limited manufactures leather bags for offices and school purpose. Very good. The following information is related with the production of leather bags for the month of September. Again, there is month of September, which means it is emphasizing on a month and not an year. अगर कोई भी साल भर का एडजस्टमेंट हो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको मंथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो leather sheets and cotton sheets are main input and estimated requirement per bag is 2 meters of leather and 1 meter cotton cloth. 2,000 meters of leather and 1,000 meter of cotton. ठीक है. Clothes are purchased at 3,20,000 to 20,000, 15,000 respectively. Okay, which means leather जो हमारा आ रहा है वो 3,20,000 आ रहा है and 15,000 आ रहा है. तो हमको क्या है, टोटल कॉस्ट ही मतलब है हमको कितना मीटर खरीदा उससे रिलेशन हमारा कुछ है नहीं. तो 3,20,000 एंड यहाँ पे कितना हो गया 15,000 एंड फ्रेट पेड ऑन परचेजेस इज 8,500. तो हमको पता चल गया कि कितना हमको फैक्ट्री में लाने के खर्चा कितना हो गया 8,500. तो ये भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा. तो दिस इज ऑल पॉइंट नंबर 1. ठीक है. स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड्स 2,000 मैन आवर्स, 80 per hour, which means this becomes 0.2. Other direct cost is 10 per labor hours, which is this becomes point number 3. ठीक है. Now we have 4 machines at a total cost of 22 lakhs. Machine life is 10 years with a scrap value of 10% of the original cost. Depreciation to be charged on a straight line method. So is this machinery, depreciation of machinery, is it related to factory overheads? The answer is yes, because this is machinery that is used in the factory. Therefore इसका depreciation का cost भी कहाँ जाएगा, factory overheads में जाएगा. But the point to catch is this, इसमें जो depreciation दिया हुआ है everything is for the entire year. We need to carefully calculate per month. तो जो भी हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन आएगा वो हमको मंथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे दिया हुआ है, वो मंथ पे दिया हुआ है. ठीक है. टोटल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स ऑफिस स्टाफ्स 45,000, 70,000 रेस्पेक्टिवली. तो ये हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है. ठीक है. जी लिमिटेड pays an rent of 1,20,000.
जिसमें से फॉर 2400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री प्रेमाइसेस, तो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस कितना है 2400, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिसेज ऑक्यूपाइड 240 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट रेस्पेक्टिवली ऑफ दिस फैक्ट्री स्पेस, विच मीन्स जो हम लोग रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लो ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का हम लोग पूरा रेंट दे रहे हैं, बट उसमें से छोटा सा पार्ट क्या है, किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव का कितना है 240 स्क्वायर फीट और हमारा सेल्स का कितना है 200 स्क्वायर फीट, विच मीन्स इस हमको क्या करना पड़ेगा, रेंट जो हम लोग पे करें वो पूरा फैक्ट्री का पे करें क्या, नहीं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में पूरा कॉस्ट जाएगा, द आंसर इज नो। फैक्ट्री कॉस्ट में से हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको एडमिन का और सेल्स का क्या निकालना पड़ेगा, उनके रेंट के कॉस्ट निकालने पड़ेंगे। तो देर इज एन रेंट एडजस्टमेंट, तो ये वाला एक एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये वाला एक एडजस्टमेंट हो जाएगा, दिस इज 4, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 0.4। फ्रेट ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स 18,000, तो हमने बोला फिनिश गुड्स की डिलीवरी हो रही है, फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हमारा क्या है, ड्यूरिंग द मंथ 35 kgs ऑफ स्क्रैप फ्रॉम लेदर एंड कॉटन सोल्ड एट 150, तो ये क्या होगा, स्क्रैप सोल्ड हुआ, ठीक है, स्क्रैप का भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इट्स ग्रेट, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल्स, देयर इज फिनिश गुड्स ऑफ 100 बैग्स इन स्टॉक एट द एंड, विच मीन्स हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग इनपुट मटेरियल का कुछ भी नहीं था, हमने सारा का सारा क्या किया, परचेज किया। बट फिनिश स्टॉक का भी क्या, ओपनिंग नहीं है, बट हमारे पास क्लोजिंग कितने का है 100। हमने प्रोडक्शन कितना किया, प्रोडक्शन हमने 1000 यूनिट्स का किया, 1000 बैग्स का किया, क्लोजिंग हमारे पास कितना बचा, 100 बैग्स का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग, ठीक है। ठीक है, अब आप नोटबुक खोलो, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। Now this is question number 9. पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्या पॉइंट आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का हमारे पास मल्टीपल एडजस्टमेंट्स है क्या, द आंसर इज नो, हमारे पास सिंपल सिंपल दिया हुआ है 3,20,000 प्लस 15 एंड 8,500, वी कैन राइट दिस डाउन, ठीक है, 3,20,000 प्लस 15 प्लस 8,500, which gives me how much, 320 plus 15,000 plus 8,500, 343,500, ठीक है। Then second point we have direct wages, direct wages का point, this is 2, which is 2,000 man hours and 80 per hour, which is 2,000 hours into 80 per hour, which gives me how much, 1,60,000.
Then we have direct expenses. Direct expenses, how much is mentioned in the क्वेश्चन में कितना दिया? अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज 10 पर लेबर आर, विच मीन्स 10 रुपये पर लेबर आर के लग है, और लेबर आर हमारे पास कितना है? 2000, तो 2000 इंटू 10 इज 20,000, तो 2000 इंटू 10, तो दिस गिव्स अस प्राइम कॉस्ट विच इज 343,500 प्लस 1,60,000 प्लस 20,000, तो दिस गिव्स अस 5,23,500. दिस इज व्हाट? प्राइम कॉस्ट. ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपका क्या पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4 में आपके पास रेंट, दो चीज़ें, एक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और एक हमको रेंट कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो दोनों का वर्किंग नोट बना लेंगे हम लोग. वर्किंग नोट 1 फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, क्योंकि हम लोग वर्किंग नोट एक शीट में आपका पूरा कॉस्ट शीट हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में आपका क्या आ जाएगा? वर्किंग नोट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्किंग नोट 1. ठीक है, अब वर्किंग नोट 1 में आपका क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन. एसेट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22 लाख. फिर हमारा ईयर्स कितना दिया हुआ है? विच इज 10 ईयर्स. देन लाइफ कितना दिया? 10 ईयर्स का. ठीक है, फिर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, विच इज हाउ मच? 2,20,000. स्क्रैप वैल्यू 2,20,000. तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा? 22 लाख माइनस 2,20,000 डिवाइड बाय 10, तो which comes to 1,98. But again we need to be careful, this is per annum. Per month how much will incur? This divided by 16,500. ठीक है, perfect. 16,500. Now this is done, but admin factory overheads में there is another point, rent का. रेंट में क्या बोल रहा है? 22,400 स्क्वायर फीट का पूरा फैक्ट्री है. ठीक है, एंड उस फैक्ट्री में किसका है? एडमिन का भी हिस्सा है, जो 2,240 स्क्वायर फीट का एडमिन का है, एंड सेल्स डिपार्टमेंट का कितना है? 200 स्क्वायर फीट का है. ठीक है, वर्किंग नोट 2 लिखेंगे. वर्किंग नोट 2 रेंट. ठीक है, तो टोटल हम एरिया कितना है? 2,400. ठीक है, स्क्वायर फीट. रेंट हमने कितना पे किया हुआ है? रेंट हमने पे किया हुआ है, रेंट इज हाउ मच? 1,20,000 पर मंथ. रेंट हमने किया है 1,20,000. अब इसमें से 240 हमारा जो कितना है वो एडमिन का है. 240 किसका है? एडमिन का. एंड 200 कितना है? सेल्स टीम का. ठीक है, तो पर स्क्वायर फीट कितना हो गया हमारा? तो 1,20,000 टोटल 2,400 स्क्वायर फीट का है. पर स्क्वायर फीट हमको निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 2,400 विच गिव्स अस व्हाट? 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट. विच मीन्स एडमिन का हमारा कितना हो गया? एडमिन रेंट, सेल्स रेंट. ठीक है, एडमिन रेंट इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 240 विच इज 12,000, एंड सेल्स का 50 इंटू 200
विच इज 10,000. सो दिस इज इक्वल्स टू 22,000. तो फैक्ट्री का हमने कितना टोटल रेंट कितना पे किया, 1,20,000 माइनस 12,000 एंड माइनस 10,000 विल गिव मी माई फैक्ट्री. पूरा रेंट हमने कितना पे किया, उसमें से एडमिन का निकाल दे रहे और किसका निकाल दे रहे, सेल्स का निकाल दे रहे. तो हमारे पास कितना बचेगा, 98. तो हमारे पास दो कॉस्ट आ गए, 98 एंड 16,500. तो विच इज इक्वल्स टू 98 प्लस 16,500. This will result into what, 98,000 plus 16,500. This will result to 1,14,500. 523, 500, 638. This is my net factory cost. Because हमारा WIP का कोई भी एडजस्टमेंट है क्या, द आंसर इज नो. WIP का हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है, अब आते क्या, तो हमने क्या याद किया था, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट. फिर हमने क्या याद किया था, फैक्ट्री WIP एडमिन. एडमिन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा कुछ है क्या, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देयर इज दिस वन पॉइंट, ड्यूरिंग द मंथ हमारा स्क्रैप सेल हुआ. तो ये क्या है, यहाँ पे मटेरियल का, रॉ मटेरियल का स्क्रैप सेल नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा पूरा बनने के बाद मटेरियल का स्क्रैप सेल हुआ. ड्यूरिंग द मंथ 35 kgs ऑफ स्क्रैप कटिंग फ्रॉम लेदर एंड कॉटन आर सोल्ड फॉर 150. तो नोवेयर इट इज मेंशन्ड रॉ मटेरियल. तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ये फिनिश गुड्स का हमारा हुआ है. ठीक है, फिनिश गुड्स का हमारा स्क्रैप हमारा सेल हुआ. तो फिनिश गुड्स का स्क्रैप अगर रॉ मटेरियल मेंशन होता तो हम रॉ मटेरियल एडजस्ट करते, अदरवाइज हम क्या एज्यूम करेंगे, ये फिनिश गुड्स का स्क्रैप है. तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, एडमिन के वहाँ पे होगा. एंड यहाँ पे जो एडमिन का रेंट दिया हुआ है, एडमिन क्या यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड मेंशन किया है, द आंसर इज नो. तो ये कहाँ पे जाएगा, ये कॉस्ट लास्ट में जाएगा. ठीक है, जो भी रेंट आ रहा है पॉइंट नंबर 5 में, मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बिकॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं है इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये स्क्रैप का एडजस्टमेंट कर देंगे, प्लस स्क्रैप बेनिफिट होगा हमारा, स्क्रैप ऑफ मटेरियल्स विच इज हाउ मच, 150 इंटू 35, 150 इंटू 35 विच गिव्स मी 5250 5250 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 632,750. दिस विल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, दिस विल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब हमारे पास कौन से एडजस्टमेंट्स बचते हैं, हमारे पास इसके बाद होने के बाद हमारे पास फिनिश गुड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बचते हैं. तो फिनिश गुड्स का हमारे पास है क्या, द आंसर इज ओपनिंग नहीं है, बट क्लोजिंग का है क्या, हाँ क्लोजिंग में दे हैव रिटन कि हमारे पास कितना है, 100 बैग्स. तो प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग है हमारा कुछ भी नहीं है, तो ओपनिंग में हमारा 0 है. फिनिश गुड्स में क्या होगा, हमारा वर्किंग नोट 3 बन जाएगा. तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 3,32,750. फिनिश गुड्स को कैलकुलेट करना होता है तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट 3, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, 6,32,750, 6,32,750. एंड हाउ मेनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो कि हमने क्वेश्चन में लिखा था 1,000. क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 100. तो पर यूनिट हमारा कितना कॉस्ट आ गया, पर यूनिट कॉस्ट विच विल बी 6,32,750.
750 divided by 1000 units. So 632 750 divided by 1000 units will give me how much? 632.75. Closing stock will be how much? 632.75 multiplied by 100, which will be 63,275. तो यहाँ पे will calculate 63,275. 63,750, 10%. This will come to 5,69,475. This will be what? Cost of goods sold. ठीक है. Then cost of sales में हमारे पास कितना आ जाएगा? फिर हमारे पास आ जाएगा admin, which is general in nature. Then we'll have selling and distribution. Admin में what cost do we have? तो admin में point number 5. First is salary 45 and 72. Then is rent. ठीक है, जो rent हमारे पास ये है. तो this will be 45,000. This will be 72,000. Adding, now what need to have? We need to also add rent. Rent कितना था? Admin का 12,000, 10,000. तो admin में हम लोग 12,000 प्लस कर देंगे and selling में हम लोग 10,000 प्लस कर देंगे. तो this will be 82,000 and this will be 57. ठीक है. Also there is a point of delivery. Freight paid on delivery of finished goods 18,000. Which means कितना फिनिश गुड्स डिलीवर करने में, कस्टमर तक पहुंचाने में अगर ये खर्चा हुआ है तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है, तो ये खर्चा किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. तो दिस विल बी नॉट 82,000, दिस विल बी 1 लाख. 569 plus 57,000 plus 1 lakh rupees is equals to 726,475. This will be what? Cost of sales. Cost of sales. So question asked us to calculate what? The question caused us to calculate. All of this is calculated. The answer is yes. Cost of sales, cost of goods sold, everything is calculated. Okay. ओके, सो दिस इज डन. कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कैलकुलेटेड. एवरी एस्पेक्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा था सब हमने कैलकुलेट कर दिया. द आंसर इज यस कि सब कैलकुलेट हो गया. ठीक है, तो दिस इज डन. क्वेश्चन 9 इज ऑल्सो डन. ठीक है, अब एक और होमवर्क क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. जस्ट अ स्मॉल एडजस्टमेंट, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना. ठीक है, रिसर्च and development, research and development cost. ठीक है, R&D cost इसमें कितना है? R&D cost is 5,000 rupees. ठीक है, एड अ पॉइंट वाइल सोल्यूशन. ये 5,000 का R&D कॉस्ट भी आप इंक्लूड करते हुए चलना. ठीक है, ये 5,000 का R&D कॉस्ट आप इंक्लूड करके फिर सॉल्व करना. तो वी हैव
होमवर्क क्वेश्चन में हमारा क्या क्या आ जाएगा? होमवर्क क्वेश्चन में आज के दिन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, करेक्ट? व्हाट आर द 3 होमवर्क क्वेश्चंस? होमवर्क क्वेश्चंस आर क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 10। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? तो सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना? कल एक बार ब्रीफली डिस्कस कर देंगे एंड देन फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 7 आर तो सेम, ठीक है? ये तो एकदम ही सेम है जो हमने आज सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10 वुड भी थोड़ा डिफरेंट बट ईजी क्वेश्चन है। तो आई वांट यू टू प्रैक्टिस दीज 3 क्वेश्चंस। कल हम लोग, अगर आपको कुछ इश्यूज होगा तो आप बताना, देन हम लोग ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? कूल, ओके देन, सी यू, बाय बाय।